Hello everyone. Today we'll discuss about the laws of thermodynamics. There are some fundamental laws of thermodynamics. For example, zeroth law, first law, second law. These are some of the fundamental laws. Today we'll discuss one of the most important fundamental law of thermodynamics, which is known as first law of thermodynamics. Let's begin. What this law actually is, it is a law of conservation of energy. It says that energy will, no matter what, will always be conserved. You can just change the form of energy from one form to another, but you cannot destroy or you cannot create it. So it will always remain conserved. So the very famous statement, energy can neither be created nor be destroyed, but rather transformed from one state to another. The energy balance is maintained within the system being studied defined boundary. और जो हम एनर्जी बैलेंस की बात करते हैं वो हम एक सिस्टम के बारे में बात करेंगे, एक डिफाइंड रीजन के बारे में बात करेंगे। सिस्टम से हमने आई टोल्ड यू प्रीवियसली ऑल्सो, जैसे ओपन सिस्टम होता है, क्लोज सिस्टम होता है, आइसोलेटेड सिस्टम होता है। तो सिस्टम बाउंड्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट while we are studying or dealing with the first law of thermodynamics. Okay, so the energy balance is maintained within the system. The various energies associated are being observed as the cross boundaries of the system. Boundary crossing of the boundary is important phenomena. अगर कोई closed system है तो हमें पता है कि energy क्रॉस कर सकती है, बट मास वहाँ सिस्टम का हमेशा कांस्टेंट रहेगा. So we know that कि ठीक है, mass will always remain constant, but energy can cross the boundary. So we need to take consideration this thing, and then we'll see how much energy has been converted into work or internal energy or has been lost to the surrounding. So this is a energy balance for a closed system. आप देख सकते हैं heat अंदर आ रही है system के. This is a closed system, and there is volume. Then the expansion is taking place. Expansion हो रहा है. Expansion होने की वजह से क्या हो रहा है? Work हो रहा है क्योंकि boundary expand हो रही है. जब बाउंड्री एक्सपेंड होगी तो सराउंडिंग के ऊपर वर्क करेगी. जब वर्क करेगी तो क्या होगा? बेसिकली आपकी एनर्जी कंज्यूम होगी, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो रही है. तो आप देख सकते हैं टोटल एनर्जी एंटरिंग द सिस्टम माइनस टोटल एनर्जी लीविंग द सिस्टम विल बी इक्वल टू द चेंज इन टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. So what is total energy change of a system? It is the difference between energy entering minus energy leaving. कितनी एनर्जी सिस्टम के अंदर आई है, उसके बाद कितनी उसमें से निकल गई है, और जो एनर्जी नहीं निकल पाई है वो कहाँ कंज्यूम हो गई है. क्या वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में कंज्यूम हो गई है, या वो सिस्टम से कुछ वर्क, उस सिस्टम से कुछ वर्क हमने करवाया उसमें कंज्यूम हो गई है. सो दिस इज द बेसिक कंजर्वेशन लॉ. And now if we talk about the classical thermodynamics, and if we just talk about the system of process, तो हम बोल सकते हैं कि जो नेट एनर्जी किसी भी सिस्टम के अंदर होगी वो हमेशा होगी नेट एनर्जी माइनस वर्क नेट इज इक्वल टू चेंज ऑफ एनर्जी ऑफ अ सिस्टम. मतलब एनर्जी चेंज, जो सिस्टम के एनर्जी चेंज होगा वो किसके बराबर होगा? जितनी एनर्जी नेट एनर्जी अंदर आई है माइनस वर्क अगर किया है तो पॉजिटिव किया है कि नेगेटिव किया है, उसका डिफरेंस विल बी इक्वल टू चेंज इन एनर्जी ऑफ अ सिस्टम. अब ये टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या हो सकती है? ये इंटरनल एनर्जी होती है, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी क्लासिफाई होती है, पोटेंशियल एनर्जी इज देयर. सो द टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल इनटू इंटरनल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम. सो द चेंज इन स्टोर्ड एनर्जी फॉर द सिस्टम इज, अब स्टोर्ड एनर्जी में क्या चेंज आएगा? चेंज इन टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी. कितना इंटरनल एनर्जी के अंदर टोटल चेंज है, काइनेटिक एनर्जी में कितना आया, पोटेंशियल एनर्जी में कितना आया. तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर क्लोज सिस्टम इस तरह से लिख सकते हैं. क्लोज सिस्टम है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, तो Q net minus W net will be equivalent to change in internal energy plus change in kinetic energy plus change in potential energy. So this is one of simplified form. अब क्लोज सिस्टम की बात हो रही है, फर्स्ट लॉ साइकिल की बात हो रही है. देखिए प्रोसेस में और साइकिल में एक डिफरेंस होता है. साइकिल में क्या होता है? आप जहां से स्टार्ट करते हैं वहीं पे आप एंड करते हैं. बट इन अ प्रोसेस आप ए से बी जाएंगे, बी से ए पे नहीं आएंगे. बट इन अ साइकिल व्हाट विल हैपन? यू विल गो फ्रॉम ए टू बी एंड देन फ्रॉम बी टू ए.
So some thermodynamic cycles composes of processes in which the working fluid undergoes a series of state changes such that the final and initial states are identical. But the final state and initial states are same, so that means it's going through a cycle. For such system, the change in internal energy of the working fluid is zero. तो इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होगा और जो नेट चेंज इंटरनल एनर्जी का होगा वर्किंग फ्लूइड जो भी यूज हो रहा है वो जीरो होगा। क्यों? क्योंकि फाइनल और इनिशियल स्टेट बिल्कुल सेम है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं। तो फर्स्ट लॉ अगर हम क्लोज सिस्टम के साथ लगाएंगे तो कैसे बोलेंगे? ऑपरेटिंग इन थर्मोडायनामिक साइकिल, साइकिल में ऑपरेट हो रहा है और क्लोज सिस्टम की बात हो रही है, तो क्यू नेट माइनस डब्ल्यू नेट विल बी चेंज इनटू इंटरनल एनर्जी ऑफ अ साइकिल। अब हमें पता है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ साइकिल जीरो होता है क्योंकि इनिशियल स्टेज एंड फाइनल स्टेजेस आर सेम, सो दैट विल बी इक्वल टू जीरो। तो वी हैव सीन दैट अगर एक साइक्लिक प्रोसेस है, क्लोज सिस्टम है, तो जितना भी एनर्जी आप एक सिस्टम में डाल रहे हैं वो सारी की सारी एनर्जी आपकी वर्क के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है? तो ये एक साइकिल, देखिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज साइक्लिक प्रोसेस होना चाहिए, जहां से स्टार्ट हुआ वहीं खत्म होना चाहिए, क्लोज सिस्टम होना चाहिए। दिस टू आर द एसेंशियल कंडीशंस फॉर दिस लॉ टू अप्लाई। सेकंड लॉ है, विल डिस्कस इन सेपरेट वीडियो। So now this is a reference from taken from the PK Nag, which is a standard book for thermodynamics. Students, you can go through this reading. You can just read from it, so you will understand. You will have better understanding कि किस तरह से इस law को derive किया गया। अगर आपको नहीं समझ में आता है, तो आपको मैं इस चीज को भी समझा दूंगा। This is just for the extra reading, okay? This was not required, but I just thought कि ठीक है डाल देते हैं। If someone is even more interested और डिटेल में कोई जाना चाहता है तो उसको देख लेगा, पढ़ ले। अब and if you want that I should explain this one also, then I will continue in another video lecture. So it's a very simple and very conceptual thing. So basics क्या है I've told you, but if still you feel कि yes sir we want to understand this thing also, so I'll go with it. And this is the first law of a closed system undergoing a change of state. यहाँ पे state change की बात हो रही है। ठीक है, अब देख सकते हैं इसको। You just read it out. If you don't understand, I'll make you understand. This is very simplified. This is not required for your course, but still, if someone wants to have a broader knowledge of this concept, then they can read. And if you want, then I will just make a separate video on this one particular topic also. It's not a big deal. Thank you.